Hello, hi students. So, how are you all? I hope you are doing good. Okay. So, welcome to our today's session. है ना, ask me anything on mathematics. ठीक है. So, I think this is our third session on this topic. And last session में थोड़ा सा दिक्कत आ गया था with the network issues and connectivity. So, I hope it is better today and कोई issue नहीं आती मेरी end से. So, as you know that we'll try to keep the session maximum in the language of English और बीच में for certain terms we'll use Hindi so that people irrespective of their language can understand मतलब जो भी बात कर रहे हैं हम okay so it would be a mixture of both the languages. तो we have a certain set of questions for today जो हमें solve करने हैं and through that हम कोई ना कोई like some certain topics to the left or right of it हम डिस्कस कर लेंगे है ना सो दैट द कोर कॉन्सेप्ट्स थियरी वगैरह जो भी है वो भी हमारी ब्रश अप हो जाती है एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी ऑल्सो लाइक लर्न थिंग्स ओके सो लेट्स बिगिन विदाउट एनी डिले ऑल राइट क्वेश्चन नंबर 1 फाइंड dy बाई डी एक्स विथ एन एग्जाम्पल ठीक है तो क्वेश्चन क्या चाहता है इट जस्ट वांट्स अस टू डू अ डेरिवेटिव है ना अगर गिवन अ y मतलब y की कोई तो भी इक्वेशन दी है उसका हम जो डेरिवेटिव फाइंड करते हैं dy बाई डी एक्स वो क्या होगा ओके सो आई होप एवरीवन नोज हाउ डिफरेंशिएशन वर्क्स या फिर व्हाट डिफरेंशिएशन इज है ना सो डिफरेंशिएशन में यूजुअली देयर आर टू टाइप्स राइट एक होता है अपना एक एक्सप्लिसिट फंक्शन है ना सो आई वुड से दैट एन एक्सप्लिसिट फंक्शन इज अ फंक्शन ठीक है फंक्शन को एफ ऑफ एन लिख रहा हूं मैं एक्सप्रेस्ड एज वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ओके तो हमको एग्जांपल भी लेना ही था राइट सो विल जस्ट टेक अ एग्जांपल टुगेदर विथ इट ओके सो मान लो लाइक वाई इज इक्वल टू 2x क्यूब प्लस 5 ओके नाउ y is defined implicitly okay we have to pay attention to these two terms one is explicit another is implicit okay y is defined implicitly if both x and y occur on the same side of the equation ठीक है occur on the same side of equation such as equation मान लो होगी तुम्हारी x square plus y square is equal to 4 ठीक है तो यहाँ तक समझा है सबको क्या रहता है हमारे पास में दो तरीके की इक्वेशंस होती है डिफरेंशिएशन का जब भी कोई क्वेश्चन आता है ना सो देर आर टू टर्म्स वन इज योर एक्सप्लिसिट एंड अनदर इज इम्प्लिसिट ठीक है एक्सप्लिसिट मतलब क्या हो जाता है एक्सप्लिसिट इज व्हेन y is equal to f of x and y is on one side of the equation एंड इम्प्लिसिट तब हो जाता है जब x और y के दोनों के टर्म्स जो है हमारे वो सेम साइड ऑफ द इक्वेशन पे आते हैं ठीक है तो लेट्स सॉल्व अ क्वेश्चन है ना एग्जांपल लेते हैं हम लोग इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन का ठीक है सो टू फाइंड dy बाई डी एक्स राइट आई जस्ट चेंज द इंक ठीक है सो क्या करते हैं हम हमको जब फाइंड करना रहता है dy बाई डी एक्स देर आर टू स्टेप्स इन्वॉल्व ठीक है फर्स्ट जो स्टेप होती है अपनी वो स्टेप होती है कि टेक डी बाई डी एक्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन और एक चीज याद रखनी है कि मल्टीप्लाई करना है उसको वाई डैश से ठीक है रिमेंबर टू मल्टीप्लाई बाय वाई डैश ईच टाइम यू सी अ वाई टर्म ठीक है तो अभी मैं बस थेरोटिकली समझा रहा हूँ आपको व्हेन विल सॉल्व द क्वेश्चन तो तब थोड़ी बेटर आइडिया मिल जाएगी ओके एंड देन सेकेंड इज सॉल्व फॉर वाई डैश ओके क्लियर है दो स्टेप्स हैं बस ये होगी स्टेप वन ये होगी तुम्हारी स्टेप टू ठीक है सो लेट्स टेक अ इक्वेशन
इक्वेशन लेते हैं हम लोग, चलो यही वाली लेते हैं ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ठीक है, ये इक्वेशन किस चीज की है बताओ मुझे इन द कमेंट सेक्शन बिलो। दिस इज योर इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, है ना। तो अभी हमें क्या करना है, वी हैव टू डू द डिफरेंशिएशन फॉर दिस इक्वेशन। ठीक है, dy बाई डी एक्स जो है हमें इसका ये फाइंड करना है। सो हाउ वुड वी गो अबाउट इट। फर्स्ट स्टेप्स है ना, दो स्टेप्स बताइए मैंने जो हमें फॉलो करनी है, राइट। सो व्हाट वील डू इज, दोनों साइड पे डी बाई डी एक्स लेना है, राइट। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 4, राइट। या फिर उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर का डी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, इट वुड बिकम 2x प्लस वाई स्क्वायर का 2y y dash, है ना। आई टोल्ड यू दैट विल मल्टीप्लाई इट बाय y dash एवरी टाइम वी सी अ y टर्म। ठीक है, तो 2y y dash इज इक्वल टू 0। ऑल राइट, नाउ सेकेंड स्टेप क्या थी, सॉल्व फॉर y dash। ओके, तो क्या आ जाएगी इक्वेशन मेरी, 2y y dash इज इक्वल टू माइनस 2x, y dash इज इक्वल टू माइनस x बाय y। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। सपोज आई हैव अ क्वेश्चन, मान लो y इज इक्वल टू, जो अपना एक्सप्लिसिट वाला था 2x3 + 5। नाउ यू हैव टू डू dy बाई डी एक्स, तो क्या हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ दिस, ये वाली टर्म तो बन जाएगी तुम्हारी 6x² प्लस 5 वाला तो क्या है कांस्टेंट टर्म है y, तो कुछ आएगा इसमें नहीं आएगा। ओके, सो दिस इज हाउ यू प्रोसीड अबाउट विद क्वेश्चंस। नाउ हाउ टू फाइंड, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2, हाउ टू फाइंड अ कोएफिशिएंट्स वेरिएबल, है ना। तो इसका क्या मतलब होता है, हाउ टू फाइंड कोएफिशिएंट्स इन एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। ठीक है, सो स्टेप अगेन इसमें भी टू स्टेप्स होती है हमारी। योर फर्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफाई एंड सेपरेट ऑल द टर्म्स ऑफ द अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जितने भी स्टेप्स हैं, आई मीन जितने भी टर्म्स हैं तुम्हारे, उनको हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई एंड सेपरेट। ठीक है, आइडेंटिफाई एंड सेपरेट ऑल द टर्म्स ऑफ योर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एंड सेकेंड थिंग जो याद रखनी है हमें, जो उसकी जो साइन है, ठीक है, वो मेंटेन करनी है, कीप द साइन इन फ्रंट ऑफ द टर्म। ओके, we'll just see a question, nothing to worry about. Okay, and second step is लुक फॉर न्यूमेरिकल वैल्यूज। ओके, कोएफिशिएंट क्या होता है तुम्हारा कोई भी वेरिएबल का, इट इज द नंबर विच इज एसोसिएटेड विथ योर वेरिएबल। ओके, सो लुक फॉर न्यूमेरिकल वैल्यूज, look for numerical values in front of the variables in each term to identify your coefficient। okay, अभी मान लो इफ देयर इज नो नंबर इन फ्रंट ऑफ द कोएफिशिएंट, तो इन दैट केस क्या करेंगे हम, वो वाले केस में द कोएफिशिएंट इज 1 एंड इफ देयर इज नो वेरिएबल इन योर टर्म, ओके, तो मतलब क्या, देयर इज अ कांस्टेंट एंड कांस्टेंट वोंट हैव अ कोएफिशिएंट। ऑल राइट, तो लेट्स सी एग्जांपल प्रॉब्लम, है ना। So example question, let's take 2x square plus 4xy plus 3. Now, how many terms do we have in this? We have three terms, एक 2x square है, एक 4xy है and एक 3 है। Okay, this is your term number 1, this is your term number 2 and this is your term number 3। Now 3 दिया है मुझसे। Now is this a variable? No, it is a constant, है ना। तो ये टर्म क्या होगी अपनी, ये तो कांस्टेंट हो गई। कांस्टेंट का कोएफिशिएंट होता है कुछ नहीं होता। नाउ द अदर टू टर्म्स, व्हाट डू वी हैव ओवर हियर,
We have x square. We have xy over here, right? X square and xy. So we'll just break it. Okay, we have 2x square. साइन क्या है यहाँ पे आगे इसकी पॉजिटिव 4xy. साइन क्या है यहाँ पे पॉजिटिव प्लस 4xy. ठीक है, तो ये जो दो टर्म्स है हमारे, ये दो टर्म्स क्या हो गए, ये हो गए हमारे वेरिएबल्स. नाउ इनका कोएफिशिएंट है ना, व्हाट आर द टू वेरिएबल टर्म्स एक्स स्क्वायर एंड एक्स वाई. ना इसके आगे मैंने क्या बोला है, न्यूमेरिकल वैल्यूज ढूंढनी है इन फ्रंट ऑफ अ वेरिएबल और उनका साइन देखना है. तो साइन क्या इसका +2. सो इसका कोएफिशिएंट क्या हो गया +2 एंड इसका कोएफिशिएंट क्या हो गया हमारा, इट इज +4. ओके, सो कोएफिशिएंट्स क्या मिले हमें, पहले दो टर्म्स देख के वी फाउंड द कोएफिशिएंट्स टू बी +2 एंड +4. ऑलराइट, ये हो गया एक केस. नाउ if I have another equation, okay, let's take equation 3xy minus 4y square minus 2y. Okay, now in this situation, मतलब ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है हमारा, इसमें कितने टर्म्स दिख रहे हैं हमको. We can see 1 2 and 3 terms, right? So इसमें भी कोएफिशिएंट हमें फाइंड आउट करना है. सो क्या करेंगे, विल जस्ट राइट द थ्री टर्म्स ऑल टुगेदर, राइट. विल राइट 3xy minus 4y square and minus 2y, right? These terms are your variables. So coefficient क्या आया यहाँ से 3, यहाँ से -4, यहाँ से -2. Okay, so therefore for the terms है ना जो variables हैं, we have the coefficients 3, -4 and -2. All right, clear till here? चलो, नाउ वन मोर एग्जांपल है ना जहाँ पे मैंने बोला था इफ यू हैव जस्ट वन इन फ्रंट ऑफ इट, लाइक इफ देयर इज नो नंबर इन फ्रंट ऑफ द वेरिएबल, तो क्या. कि सो वी हैव x प्लस 2xy स्क्वायर z माइनस z प्लस 4. ऑलराइट, क्लियर. सो दिस इज द क्वेश्चन. ठीक है, फटाक से टेक अ टाइम पीरियड, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस. ओके, टेक योर टाइम. चलो, only 30 seconds. It's very easy and tell me the answer down in the comments. X plus 2xy square z minus z plus 4, this is your equation. You have to tell me कि इसके जो coefficients है वो क्या क्या है. Quick, quick, quick. It should not take इतना time. X 2xy square z minus z and 4. 4 तो अपना हो गया constant, right? 4 is a constant. It's not a variable. We have these variables. Now x. इसके आगे क्या है 1. So here you have your coefficient as 1. Now this thing, when you have 2xy square z, so here your coefficient is +2 or you can simply write it as 2, okay? And minus z, मतलब coefficient क्या हो गया यहाँ पे? The coefficient over here is -1. All right? Clear है यहाँ तक सबको? Let's move ahead. Okay. So far we've discussed two questions. One is we figured out that how to do dy by dx, है ना? And second thing which we saw was, given an equation, how do we find the coefficients of the variable. Okay, chalo, let's move ahead. Question number 3. Okay, I think there is a typo in this question. We'll just come back to it later. By the time जो बाकी के questions हम वो solve करेंगे, we'll take this question at the end. Okay, let's go to question number 4. क्या दिया हमें, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5. ओके, सो वी हैव टू डिफरेंशिएट द फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. ओके, सो वाई इज इक्वल्स टू साइन ऑफ योर एक्स स्क्वायर प्लस 5. ठीक है, क्वेश्चन में करना क्या है हमें, वी हैव टू डिफरेंशिएट
द फॉलोइंग फंक्शन, डिफरेंशिएट द फंक्शन, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। नाउ हमने सीखा था ऊपर है ना डिफरेंशिएशन कैसे करना है dy by dx। नाउ दिस इज व्हाट टाइप ऑफ फंक्शन, दिस इज योर एक्सप्लिसिट फंक्शन, ओके, दिस इज योर एक्सप्लिसिट फंक्शन। So when we'll differentiate this, we'll differentiate on both sides with respect to x, है ना। तो क्या लिखूंगा मैं, I would write dy by dx is equal to d by dx of sin x square plus 5, right? So when I'll open this up, इस पे हम लोग क्या लगाएंगे, we'll apply the chain rule, all right? When I'll apply the chain rule, इसको जब मैं open करूंगा, what I'll get is कॉस ऑफ साइन का क्या हो जाएगा चेंज होके, कॉस एक्स स्क्वायर प्लस फाइव डी बाई डी एक्स, एंड एक्स स्क्वायर प्लस फाइव वाली जो टर्म है वो वैसी आ जाएगी, राइट। नाउ व्हेन आई राइट इट अगेन, नेक्स्ट स्टेप में आई विल गेट कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस फाइव इंटू एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, टू एक्स, फाइव का जीरो, सो टू एक्स प्लस जीरो, ऑल राइट। एंड इन द नेक्स्ट स्टेप what will I get? I'll get 2x into cos of x square plus 5. Okay, so this is the answer to your question. ठीक है, easy है ना। Let's move to the next question. I hope यहाँ तक सबको सब समझ में आ रहा है and it's clear. Let's move ahead to question number 5. क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 5 में, evaluate 8 factorial. Okay, now factorial here, I hope everyone knows factorial क्या है ना। If I have a term which is n factorial, so इसकी जो value रहती है that is your n into n minus 1 into n minus 2 into n minus 3 till 2 into 1, okay, this is your n factorial. So यहाँ पे हमें n की वैल्यू क्या दे रखी है इन्होंने, they have given n is equals to 8. So when I have to calculate the value of 8 factorial, what would it be like? n क्या हो गया तुम्हारा 8 into 8 minus 1 7 into 8 minus 2 6 into 5 up till 1 into 4 into 3 into 2 into 1, ठीक है। 1 से मल्टीप्लाई करने का पॉइंट मतलब, ठीक है, यू जस्ट हैव टू राइट इट फॉर द रिप्रेजेंटेशन, बट देन इट डजंट मीन एनीथिंग, है ना। 1 से कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे, नंबर विल स्टे द सेम, ठीक है। नाउ इफ यू इवैल्यूएट, सो क्या आ जाएगा यहाँ पे, 3 इंटू टू 6, 6 इंटू 4 24, इंटू 5 120, इंटू 6 720, इंटू 7, दिस इज योर 720 इंटू 56, so your answer would be 40320, okay, easy है ना। हम जब एनपीआर एनसीआर वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, है ना, व्हेन वी सॉल्व परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, तो उसमें क्या हो जाता है, उसमें वी सी सर्टेन टाइम्स, है ना, लाइक एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, है ना, और वी हैव एन फैक्टोरियल अपॉन एन फैक्टोरियल इनटू एन, सॉरी आर फैक्टोरियल इनटू एन माइनस आर फैक्टोरियल एंड थिंग्स लाइक दैट, है ना। तो उसमें जो फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट है तुम्हारा, वो ये यूज हो जाता है, ठीक है। बेसिक फंडामेंटल्स, ओके, वी आर नॉट डूइंग वेरी टफ क्वेश्चंस टुडे, ठीक है। सो आई होप यहाँ तक क्लियर है। लेट्स मूव अहेड, ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्या दिया है मुझे क्वेश्चन नंबर 6 में, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन, ठीक है। गाइस इफ यू आर मूविंग अ बिट टू फास्ट यू कैन जस्ट लेट मी नो, है ना, हम जो स्पीड है वो हम स्लो कर सकते हैं थोड़ी सी, एंड वी कैन स्पेंड मोर टाइम ऑन द क्वेश्चंस एज वेल, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन x कॉमा y सच दैट, अच्छा ठीक है, वो x की पार्ट वो x स्क्वायर है, ओके, आई जस्ट राइट इट डाउन, है ना, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू वन, बीच में उसकी सारी साइंस एक्चुअली गायब हो गई है, ओके,
एंड योर x प्लस वाई जो है दैट इज ग्रेटर देन 1 and x is greater than 0, y is greater than equal to 0. Okay, so this is your question, please focus over here. All right, क्या करना है हमें ये वाले क्वेश्चन में? वी जस्ट हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन. ओके, सो देर आर 2-3 ways टू अप्रोच द क्वेश्चन, है ना? लाइक, तो लेट्स डू वन थिंग, विल ट्राई टू सॉल्व इट इन बोथ द पॉसिबल मेथड्स, है ना? लाइक कैसे कर सकते हैं हम? एक थोड़ी सी लेंदी हो जाएगी, बट देन आई विल ब्रेक इट डाउन फॉर यू, एंड अनदर इज द शॉर्टर मेथड. ओके, सो लेट्स गो फॉर द शॉर्टर मेथड. तो लेट्स जस्ट सी व्हाट ऑल थिंग्स वी हैव बीन गिवन ओवर हियर. ठीक है, एरिया ऑफ द रीजन अभी हमको बोला है यहाँ पे इन्होंने, बट देन व्हाट रीजन डू वी हैव? दैट इज द फर्स्ट थिंग व्हिच विल हैव टू सी. सो फर्स्टली दे हैव गिवन अस अ इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, है ना? सर्कल दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1. What does this represent? It represents a circle. Represents a circle with center at 0,0, right? And radius कितना हो गया इसका? 1 unit. Okay. Now note that since inequality क्या यूज हुई है यहाँ पे? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है हमारा दैट इज लेस देन और इक्वल टू 1, राइट? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 1. तो इसका क्या मतलब होता है? इट मीन्स जो रीजन हम कंसिडर कर रहे हैं, है ना, द रीजन इट रिप्रेजेंट्स द इंटीरियर ऑफ द सर्कल. ओके, द रीजन इट रिप्रेजेंट्स द इंटीरियर ऑफ द सर्कल. कौन सा सर्कल हमारा जो है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1. ऑल राइट, इफ द साइन वुड हैव बीन डिफरेंट, लेस देन 1 के जगह पे अगर ग्रेटर देन 1 का साइन होता, तो कंसिडर दिस इज योर सर्कल. लेस देन 1 मतलब ये रीजन हो गया, and if it would have been greater than 1, then the outside region would have been the one which we are considering. Okay, चलो let's move ahead. Now second thing क्या दी उन्होंने हमको? x plus y is greater than equal to 1. Okay, so your x plus y is equal to 1. ये कौन सी इक्वेशन हो गई तुम्हारी? What equation does this is this? Like, what does it represent? Tell me. It represents the straight line. Okay, so your x plus y is equal to 1 is the equation of a straight line which cuts line cutting x and y axis. इंटरसेप्ट बताना है इसके एट 1,0 एंड 0,1. ओके, क्लियर है ना? हमें इक्वेशन पता चल जाती है इफ आई पुट 1,0 इन दिस, है ना? तो एक यहाँ पे कट होएगी और एक यहाँ पे कट होएगी, राइट? This is your 0,1 and this is your 1,0. Okay. Now whenever you have been given a question like this, हमको क्या बनाना है? फिगर बनाना है. ठीक है, तो विल ड्रॉ फिगर, बट बिफोर दैट नाउ सी, यहाँ पे भी हमको इक्वेशन क्या दी थी? x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, राइट? तो इसका क्या मतलब है? व्हाट डज दिस रिप्रेजेंट? विच रीजन? जब मैंने बोला ग्रेटर देन मतलब बाहर वाली साइड, द आउटर रीजन. ओके, सो दिस रिप्रेजेंट्स द रीजन which is lying above the line. Region lying above the line x plus y is equals to 1. ओके, सो हमने ये लाइन बना ली यहाँ पे, है ना? जो हमारी लाइन थी x plus y is equals to 1, एंड सिंस द इनइक्वालिटी वाज ग्रेटर देन फॉर द इक्वेशन, मतलब जो लाइन की ऊपर वाली साइड है, हैड इट बीन लेस देन, तो कौन सा साइड कंसिडर करते हैं हम लोग? ये वाला साइड. ठीक है, ओके. नाउ क्या बोला था मैंने? वेन एवर वी गेट अ क्वेश्चन लाइक दिस, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट वी डू? विल ड्रॉ अ डायग्राम. ठीक है, लेट्स मेक अ डायग्राम, है ना? इसके लिए तो सबसे पहले तो क्या बनाएंगे हम? सर्कल, है ना? जो इक्वेशन मिली है हमको सर्कल की, विल हैव टू ड्रॉ दैट, राइट? सो आई विल जस्ट ड्रॉ माय कोऑर्डिनेट एक्सिस, है ना? यहाँ पे ये हो गया अपना कोऑर्डिनेट एक्सिस, राइट?
And now we'll have to draw a circle. Okay. Is there any tool to draw a circle? चलो ठीक है कोई नहीं. We'll just draw a normal diagram है ना for understanding. It need not be perfect but ठीक है समझ लो अभी. I'm using a pen tab so it's little tough for me to draw a proper circle but then I hope you get the diagram. All right. ठीक है. Oops. Okay. ठीक है. ये हो गया हमारा circle. And now we also have a line, right? लाइन कहाँ से जा रही है? नाउ वेट 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 बिफोर दैट व्हाट इज दिस पॉइंट? 0,0. ये होगी तुम्हारी पॉजिटिव एक्स एक्सिस. दिस इज योर नेगेटिव एक्स. दिस इज योर पॉजिटिव वाई. दिस इज योर नेगेटिव वाई. ओके. 0,0 एंड रेडियस कितनी बोली थी मैंने इसकी? वी हैव 1 यूनिट. बराबर. सो नाउ इफ दिस इज योर 1 यूनिट. ओके. सो जो पॉइंट है मेरा ये वाला and ये वाला and ये वाला and this one. Okay, what would my these 4 points be? My this point would be 1,0, right? This point would be 0,1. This point would be -1,0, and this point would be 0, -1. Okay. Now when we were talking about the line, जो है हमारी कौन सी लाइन थी वो? आर लाइन एक्स स्क्वायर सॉरी एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1 है ना. I'll just write over here the equation of this is your x square plus y square is equals to 1. Okay. And जो मेरा लाइन था this one है ना, जो यहाँ से कट करके जाएगी, the straight line, right, which I have. What is the equation of my straight line? X plus y is equals to 1, right? This is one equation that I have and this is my another equation. Okay. तो ये तो चलो अभी हमने जो डायग्राम है वो बना लिया, ड्रॉ कर लिया हमने डायग्राम. ओके. नाउ व्हेन वी वर कंसिडरिंग द रीजन है ना, जो एरिया हम कंसिडर कर रहे थे, सो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द सर्कल, मेरा इक्वेशन क्या था? माय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाज लेस देन इक्वल टू 1, मीनिंग दैट आई एम कंसिडरिंग द रीजन ऑफ द सर्कल है ना, लाइक सर्कल के अंदर वाला. सो दिस एंटायर रीजन सर्कल का हो गया मेरा जो ये वाला शेडेड रीजन. ओके. दिस इज व्हाट आई एम कंसिडरिंग फॉर my x square plus y square less than 1. And for the other one, क्या कंसिडर कर रहे थे हम यहाँ पे? x plus y greater than equal to 1, मीनिंग लाइन के ऊपर वाला रीजन. मीन्स कौन सा रीजन? दिस रीजन. नाउ व्हाट इज द कॉमन रीजन इन दिस? ये जो हमारा रीजन है यहाँ वाला, दिस इज द कॉमन रीजन. ओके. दिस रीजन is your common region. Okay. We'll just break down the diagram. This is your 0,0, this is 1,0, and this is your 0,1. Okay. एंड इक्वेशन जो है लाइन वाइन की वो तो हमारी नॉर्मल ही रह गई है ना. इक्वेशन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1 एंड दिस इज योर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1. ओके. क्लियर. नाउ व्हेन वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, तो हम क्या करेंगे? वी विल इंटीग्रेट इट. ओके. नाउ हाउ डू वी इंटीग्रेट इट? लेट्स सी. दैट इज व्हाट वी आर हियर टू फाइंड आउट है ना. Therefore, your area of shaded region would be रेंज देख लेना कहाँ से कहाँ तक है अपनी. 0 to 1 है यहाँ पे. Along this line also it is 0 to 1. Okay. At no point are we crossing 0 और 1. तो जो रीजन में हम इसको इंटीग्रेट करेंगे that would also be from 0 to 1 itself. Okay. So it would be integration of 0 to 1 under root of 1 minus x square dx minus 0 to 1 1 minus x dx है ना. नाउ फॉर दोज हु माइट बी आस्किंग मी कि सर ये एक्स स्क्वायर डी एक्स वगैरह क्या कहाँ से आ गया है ना, क्या करना है हमको? टर्म्स हमने क्या बोली है? वेन एवर वी हैव अ implicit function, what do? We'll write it in terms of y. That is one option which we have. क्या कर दिया मैंने? y स्क्वायर को लिख दिया मैंने 1 माइनस एक्स स्क्वायर. यहाँ से y क्या मिला मुझे? y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट.
And for this one, what did I do? For the other equation, my y would simply be 1 minus x. है ना? तो जब मेरे को डेरिवेट करना है, I mean इंटीग्रेट करना है मुझे इसको, I'll change my explicit function to my implicit function. All right? Clear? How did we get this? है ना? Let's move ahead. Okay. So now when I'm integrating it, formula क्या आएगा इसका? 1 minus under root 1 minus x square. It is x by 2 under root 1 minus x square plus 1 upon 2 sine inverse of x by 1 minus x plus x square by 2, and this would go from 0 to 1. Okay, दोनों चीजें ओपन कर दी है. So now when we'll put the value, पहले जो upper limit है उसकी value minus the lower limit वाला value. Okay, so this would break down to half into under root 1 minus 1 का square, okay, which is basically root 0, plus 1 upon 2 into sine inverse of 1 upon 1, which is your 1, minus 1 plus 1 by 2. And when I'll substitute 0 in this, तो तब क्या आएगा मेरे पास में? 0 by 2 under root 1 minus 0 plus 1 upon 2 sine inverse of 0 by 1 minus 0 plus 0 by 2. Okay, so now when you'll solve this thing, क्या बचेगा अपने पास में? Pi by 4 minus 1 plus 1 by 2. देखो कैसे आया ये, फिगर इट आउट नाउ. चलो, 1 माइनस 1 स्क्वायर क्या हो गया तुम्हारा? 0 हो गया, टर्म उड़ गई. माइनस 1 प्लस 1 बाई 2, what would this become? This would be your minus 1 by 2. ठीक है, दिस आई हैव रिटन ओवर योर एज इट इज. ये 0 हो गया, नॉट डिफाइन है यहाँ पे, 0 हो गया, सब खत्म. ओके राइट. सो व्हाट वी कैन राइट इट एज पाई माइनस 4 प्लस 2 बाई 4, और वी कैन राइट इट एज pi minus 2 by 4 units. So this is your area of the shaded region. Okay, area of shaded region is pi minus 2 by 4 units. Clear है सबको यहाँ तक? है ना? Was it easy to solve? That was easy to solve, right? So like this was one method है ना जिससे हमने solve किया. Now rather than doing both of the things together, we can simply break it down and also solve it. But then वो तरीके से जो हमारा पूरा equation है वो lengthy हो जाएगा. But then like whatever things we had to understand, this is a joint or say simplified method through which you can proceed questions like this. Okay, cool. Now let's move on to the next question. Just give me a minute. Question, which is your question number 7, है ना? तो क्या दिया हुआ है मुझे क्वेश्चन नंबर 7 में? They have given me that A and B, okay, A and B can do a work in 4.5 hours, okay, 4.5 hours. B and C can do it in 3 hours. C and A can complete the task in 2.25 hours. Okay. Now, if all of them begin the work at the same time, ठीक है? If all of them begin the work at the same time, so how much time will they take to finish the work? Okay.
If A and B are taking 4.5 hours, B and C together are taking 3 hours, and C and A together are taking 2.25 hours or something. Okay. So if all three of them are working together, how much time would they take to finish the work? ठीक है, ये क्वेश्चन दे रखा है हमको. Now this is a basic question एकदम, है ना? I think most of you must have attempted questions like this in your practice sessions or whatsoever. Then एक बार फिर से हम कर लेते हैं, ठीक है? So we'll just convert it into say 1 hour के हिसाब से कौन कितना काम कर रहा है ना? Like together, like how they are working, and then we'll just solve the question, है ना? सारे equations के हिसाब से. So if I write it as the amount of work done in 1 hour, say first by A and B, तो this would be my 2/9, है ना? 4.5 hours मतलब क्या हो गया ये तुमको? फ्रैक्शन यू कैन राइट इट एज 9/2. For 3 hours, you can write it as 3/1, and 2.25 को you can write as 9/4. Okay. But when I'm talking about work done, तो उसमें जो fraction है मेरा वो flip हो जाता है. The numerator becomes the denominator becomes the numerator. Okay. You write it as 1/W or 1/T. Okay. So this is your 2/9. Now, when your B and C are doing it, by B and C, that time it would be 1/3. And when your A and C are doing the task, at that time it would be 4/9. Okay. अभी क्या कर सकते हैं हम? Now we have to solve this, है ना? We have to find out what would happen if A, B, C, all three of them start the task together. How much time would they take, है ना? कितना टाइम लगेगा अगर वो तीनों लोग साथ में काम शुरू कर देता तो? So how to go about this question? What we can do is कि हम क्या कर देंगे? We'll add all the equations. So what would we get? We would get A plus B plus B plus C plus A plus C, right? So what can we write it as? 2 into A plus B plus C, right? And RHS में क्या आएगा तुम्हारा? 2/9 plus 1/3 plus 4/9, which is 2/9 plus 3/9 plus 4/9, which is 9/9, which is equals to 1. But now A plus B plus C क्या हो जाएगा तुम्हारा? A plus B plus C would become 1/2. ठीक है. यहाँ पे यूजुअली क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, व्हेन यू आर गिविंग एग्जाम्स, है ना, वहाँ पे मान लो तुमको ऑप्शंस दिया हुआ है, सो नाउ दे वुड गिव यू वन आल्सो एज द ऑप्शन जस्ट टू ट्रिक यू, है ना? लाइक तुमने सॉल्व कर लिया, अरे 9/9 1 आ गया, बट देन वी फॉरगेट दैट यहाँ पे एक 2 हमने मल्टीप्लाई किया हुआ है. ओके. So these are like, like one of the few things where the examiners want you to make mistakes, है ना? But we have to be attentive जब हम solve कर रहे हैं. We have to stay calm, composed and see each and everything properly. ठीक है? तो ये जो 2 है ये तुम्हारा जाएगा राइट हैंड साइड में. योर फाइनल आंसर वुड बी A plus B plus C is equals to half. तो जिसका क्या मतलब हो जाएगा? That A plus B plus C, है ना, like all the three of them together can finish the work in कितना hours? Now notice that, ठीक है? सी वापस से गड़बड़. This you'll have to flip it again. क्या बोला था हमने? जितना भी उनका वो है, it is 1/t. So when I have to talk about them collectively, so it would become your उल्टा, है ना? So numerator would become your denominator would become your numerator. तो तीनों बंदे ये जो हैं ये काम इनका खत्म करेंगे in 2 hours. Okay. The three of them will finish or say like complete the work in 2 hours. Let's move to the next question, which is your question number 8. क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 8 में? Find the number of straight lines passing through 2, 4 and forming a triangle of 16 square centimeter with the coordinates. ठीक है. Find number of straight lines which are passing through 2, 4 and forming a triangle
of 16 square centimeter with the coordinates. Okay. तो अभी जैसे हमको यहाँ पे लाइन दी हुई है, सो व्हाट विल डू इज कि हम पहले लाइन का इक्वेशन लिख लेंगे, है ना। सो हाउ विल बी राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन। लाइन की इक्वेशन यहाँ से हमारी आएगी y माइनस फोर इज इक्वल टू एम ऑफ x माइनस टू, राइट। एक्स वन जो है मान लो हमें वो टू दे रखा है, एक्स टू जो है वाई, सॉरी एक्स टू वाई टू विल जस्ट राइट इट एंड वाई टू इज गिवन एज फोर। ओके, सो इक्वेशन ऑफ अ लाइन इज वाई माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, है ना, ऐसी इज इक्वल टू एम. So simply like writing it to normal, like rather than keeping your variables easy, we'll just write it as y minus 4 is equals to m into x minus 2. Now ये क्या हो गया तुम्हारे, ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन लाइन का. Now next thing is what we'll have to find what is your y intercept and what is your x intercept. Okay, तो जो y intercept है तुम्हारी वो आएगी तुम्हारी y minus 4 is equal to m of 0 minus 2, है ना. y intercept मतलब क्या हो जाता है, जहाँ पे x जो है तुम्हारी 0, राइट. तो यहाँ से y आ जाएगा तुम्हारा 4 - 2m, एक पॉइंट मिल गया मान लो, है ना, यहाँ से टेंटेटिव. एंड सेकेंड इज योर x इंटरसेप्ट. तो भी x इंटरसेप्ट में क्या करूंगा मैं, y जीरो कर दूंगा. तो 0 - 4 इज इक्वल टू m ऑफ x माइनस टू. तो यहाँ से x मेरा क्या आ गया, x इज 2 - 4 अपॉन m. ओके, नाउ लेट्स ड्रॉ फिगर. फिगर की जरूरत है या इमेजिन कर सकते हो तुम लोग कैसे बनेगा लाइन, समथिंग लाइक दिस. मतलब नॉर्मल ट्रायंगल बन रहा है. आई एम नॉट अज्यूमिंग दिस इज 0, 0 बट देन ओके, यू गेट द हिंट ऑफ इट. नाउ जो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमको फॉर्म करना है, ओके, लाइक जो भी ट्रायंगल बन रहा है यहाँ से, उसका हमको एरिया कितना दिया उन्होंने, 16 स्क्वायर सेंटीमीटर. सो व्हाट वुड इट बी, इट वुड बी हाफ इंटू 4 - 2m इंटू 2 - 4/m, है ना. जो x और y दिया हुआ है हमको, सो y इंटरसेप्ट फाइंड किया हमने, x इंटरसेप्ट फाइंड किया, उसकी जो भी इक्वेशन है 2 - 4m एंड दिस वाज योर 4 - 2m. सो सिंपली 90 डिग्रीज इफ आई एम सेइंग दिस, सो दिस इज जो फॉर्मूला रहता है ट्राइंगल का, क्या रहता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. क्लियर. सो इफ यू सॉल्व दिस व्हाट वुड यू गेट, यू वुड गेट -1/2 इंटू 2m माइनस 4 का स्क्वायर बाई m एंड दिस इज इक्वल्स टू योर 16 स्क्वायर सेंटीमीटर्स, है ना. दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन कि आंसर क्या है, उसका आंसर है 16 स्क्वायर सेंटीमीटर्स. तो जब हम ये इक्वेशन सॉल्व करेंगे, तो इक्वेशन सॉल्व होके क्या आएगी हमारे पास में, 2m - 4 का जो होल स्क्वायर हो गया वो इज इक्वल्स टू -32m, है ना. या क्या बोल सकते हैं हम इसको कि 4m² - 16m + 16 इज इक्वल्स टू -32m, और 4m² + 16m + 16 इज इक्वल्स टू 0. और यू कैन से कि जो तुम्हारा 2m + 4 का स्क्वायर है दिस इज इक्वल्स टू 0, और m इज इक्वल्स टू -2. ठीक है. अभी m जो है तुम्हारा वो -2 आ गया है, तो इसका क्या मतलब हो गया कि ओनली वन स्ट्रेट लाइन, है ना. इफ वी वुड हैव गॉट टू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ m, तो इन दैट केस दो लाइंस हो जाती, बट ये वाली केस में सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन है. ठीक है, ओनली वन स्ट्रेट लाइन is passing through 2, 4 and forms a triangle of 16 स्क्वायर सेंटीमीटर with जो हमारी कोऑर्डिनेट एक्सिस है वो. ठीक है, ओके. बस और तीन एक क्वेश्चंस बाकी है, सो विल जस्ट कंप्लीट दैट एंड एंड द लेक्चर. क्या दे रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन हमको, सॉल्व 8m + 95 इज लेस देन -87m + 5. ठीक है, दिस इज इनइक्वालिटी वाला क्वेश्चन. सो देर आर सर्टन स्टेप्स विच यू हैव टू फॉलो. हम डायरेक्टली इसमें लाइक जैसे सर्टन टाइम्स में हमको ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू दिया हुआ रहता है, एंड वी जस्ट सिंपली लाइक ट्रांसपोज द टर्म्स फ्रॉम हियर एंड देयर. सो दैट इज नॉट समथिंग लाइक, दैट इज नॉट द राइट नोटेशन टू सॉल्व क्वेश्चंस ऑफ दिस टाइप. ठीक है,
तो विल जस्ट सी कि कैसे सॉल्व करना है इसको एंड हाउ टू गेट द आंसर फॉर दिस. ओके, सो फर्स्ट थिंग है ना, 8m plus 95 is less than minus 87m plus 5. What you will do is you will move your 95 to the right side है ना. तो अब इससे क्या हो जाएगा तुम्हारा, 8m would be less than minus 87m minus 90, राइट. नाउ जो मेरा ये वाला है इसको मैं मूव कर दूंगा मेरे लेफ्ट हैंड साइड में है ना. मूव minus 87m to the left side. तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, आई विल गेट माई 95m is less than minus 90. ऑल राइट. नाउ जब ये हो गया, अभी क्या करना है मेरे को, एक साइड पे m है. नाउ आई जस्ट नीड द टर्म ऑफ m राइट ओवर हियर. तो आई विल डिवाइड बोथ द साइड्स बाय 95. ओके, डिवाइड बोथ द साइड्स बाय 95. तो क्या हो जाएगा, 95m अपॉन 95 लेस देन माइनस 90 अपॉन 95. तो 5 का मल्टीपल है दोनों, तो ये हो जाएगा तुम्हारा -18/19. सो m इज -18/19. तो इसका क्या मतलब हुआ तुम्हारा, like if I have to plot a diagram for the same, your -18/19, suppose say this is your -1, this is your -2, this is your -3. Okay, and here you have your other terms. Okay, so -18/19 is like matlab almost less, like not 1, but yeah, it would be somewhere over here, -18/19. So जो ये वाला रीजन है तुम्हारा, the region on this side, this would be your -18/19 है ना. if you were to plot the graph, तो जो ग्राफ है तुम्हारा वो ऐसा सा बनता. ओके, क्लियर है. लेट्स मूव अहेड अगले क्वेश्चन पे. ओके, last two questions and then we'll be done with today's session. Okay, so question number 10. क्या दिया है हमको, ए बी सी जो है इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल. ए इज 90 डिग्री. ओके, सो जस्ट टू ड्रॉ द डायग्राम है ना. तो यहाँ पे तुम्हारा ए हो गया, ए पे उन्होंने बोला है 90 डिग्री है. नाउ यू कैन टेक एनी साइड एज योर बी एंड एनी साइड एज योर सी. ठीक है, इट डजंट मैटर सो मच. और दो चीजें क्या दी है हमको, ए बी जो है दिस इज योर √3 एंड बी सी जो है दैट इज 2. Okay, all right. Now they are asking you to find the angle C. Find angle C. Easy question है ना. Simply what we can use over here to solve this question, angle जो हमको पता है उसके हिसाब से how will we go about it. जो हमको ट्रायंगल्स का रेशियो पता है ना, अकॉर्डिंग टू व्हाट, ट्रिग्नोमेट्री. जो ये वाला एंगल है हमारा. सो नाउ इफ कंसिडरिंग आई एम कंसिडरिंग दिस एंगल, सो ये जो मेरे बाकी दो साइड्स हैं ये क्या हो जाएंगे with respect to it. This is the hypotenuse and this is the opposite. So hypotenuse upon opposite. So this would become your 1 by sine theta, right? See, how did we remember? हमने पिछले क्लास में सीखा था ना, साइन थीटा क्या रहता है हमारा, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस. कॉस थीटा क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस. एंड tan होता है हमारा ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट. Now in this case, what do I have? अच्छा, 1/sin थीटा क्यों करना है ना, सिंपली साइन थीटा भी तो लिख ही सकते हैं हम. साइन थीटा इज इक्वल्स टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस. सो साइन ऑफ सी है यहाँ पे. साइन ऑफ सी क्या है,
opposite side √3/2. तो साइन सी इज √3/2, तो एंगल सी हमारा कितना आ गया? ओके, क्लियर है सबको? लेट्स मूव टू द फाइनल क्वेश्चन एंड आफ्टर दिस विल कंक्लूड द सेशन. ओके, क्वेश्चन दिया हुआ है हमको यहाँ पे कि देर आर 100 स्टूडेंट्स इन 3 sections. ओके, इन 3 sections है. sections A है, we have section B and we have a section C. ठीक है. The average marks of all 3 sections were 84. ठीक है, average marks of all the 3 sections. तो अभी तीनों सेक्शन में मिलके कितने स्टूडेंट्स हैं? हाउ मेनी स्टूडेंट्स डू वी हैव इंक्लूडिंग ऑल द 3 sections इज 100. तो एवरेज क्या हो गया मेरा, लाइक मार्क्स जो है टोटल है ना अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 84. तो जो टोटल मार्क्स जो है मान लो स्टूडेंट्स के, दैट इज 8400. ओके, नाउ सेकेंड हिंट क्या दिया है? द एवरेज ऑफ बी एंड सी वॉज 87.5. ओके, नाउ द एवरेज मार्क्स ऑफ बी एंड सी was 87.5 and the average marks of A is 70. ओके, तो अभी कैसे सॉल्व करेंगे? हमें पूछा गया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सेक्शन ए कितने हैं. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सेक्शन ए इज हाउ मच. तो लेट्स डू वन थिंग है ना, विल कंसिडर दैट इन सेक्शन ए आई हैव n स्टूडेंट्स. ओके, तो बी एंड सी में कितने स्टूडेंट्स हो जाएंगे? 100 माइनस n in B and C. Okay, so when I'll take the average है ना, so like n का average कितना है? n into 70 plus B and C का average collectively कितना है? It is 87.5 and now this would be equal to जो हमारा total average है 84 into 100. Okay, so now if we'll just solve this equation, 70 plus n into 8750 minus 87.5 n is equal to 8400. तो यहाँ से क्या आ रहा है मेरे पास में? 17.5 n इज इक्वल्स टू -350. सो n जो हो गया मेरा क्या होएगा? 350 अपॉन 17.5 विच इज 20. सो फ्रॉम योर व्हाट डिड वी गेट? वी गॉट आवर फाइनल आंसर. जो हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सेक्शन ए वाज 20. ओके, क्लियर है? व्हाट डिड वी डू? हमने अज्यूम कर लिया एक सेक्शन में n स्टूडेंट्स है, तो बच्चे और टोटल कितने स्टूडेंट्स है? लाइक इफ आई से a प्लस बी प्लस सी इज 100, राइट? नाउ इफ a इज n, तो b एंड c कितना हो गया तुम्हारा? 100 माइनस n, सिंपली, राइट? एंड दे हैड गिवन अस द एवरेज फॉर ऑल ऑफ देम एंड सिंपली फिर हमने एवरेज कैलकुलेट कर दिया एंड द टोटल एवरेज वाज गिवन टू अस एंड वी जस्ट सॉल्व्ड इट एंड गॉट द वैल्यू n. अगर यही उन्होंने हमें पूछा रहता कि b और c में कितने स्टूडेंट्स है, तो b प्लस c में कितने स्टूडेंट्स हो जाते? 80. Okay, why? Because it was 100 minus n, which is your 100 minus 20. Clear है? Okay, so that's it students. आज के लिए इतना ही. Well, end the lecture with this. I hope जो भी हमने discuss किया it is clear to you. And if anybody still has any queries or something, you can drop it down in the comment section below. I'll see to it. And कोई specific topic या question type रहेंगे तो please suggest कर देना so that we can see if we can cover it in the next class itself. Okay. Thank you so much for joining the session.